that it was the types of a straight. The topic is equation of the straight line. So we must know how many types of straight lines are there. So the very first straight line was the x-axis, because axis itself are the straight line. The x-axis is also known as the horizontal axis. Okay, what we did yesterday, we हमने कुछ ना कुछ points लिखे थे like this. Say the coordinate points of this point is -2, 0. The coordinated point for this point is 1, 0. This is 3, 0. This is 6, 0. Fine. Because these all are lying on the x-axis, and we can see one thing, that all the coordinates on the x-axis, all the points on the x-axis, all the points on the x-axis have same y coordinate, and that is 0. इस वजह से the equation of the line of x-axis is written as y equals to 0. Second was the y-axis or the vertical axis. So we are having once again few of the points. This point is 0, -2. This point is 0, 2, 0, 3. If we talk about this point, it is 0, 1. So all the points on the y-axis are having their x coordinate to be 0. That's why the equation of the vertical axis or the y-axis is written as x equals to 0. Fine. These were the two axes. Then third type of the line is any of the horizontal line. Acha ji, horizontal line. Horizontal line means any line which is parallel to x-axis, or we can also say any line which is perpendicular to the y-axis. Yes, is this line parallel to the x-axis? Yani, is it in the same direction as the x-axis? Yes, it is. Because x-axis is perpendicular to the y-axis, so ये वाली line भी perpendicular होगी to the y-axis. So इस line को we can define in three ways. We can say this is a horizontal line, or we can say this line is a parallel line, or we can also say this line is a perpendicular line to the y-axis. Okay, fine. When we checked out the level, or we can say the height of this line, it is passing through the fifth point on the y-axis. Let's see the coordinates. If we see the coordinates of this point, x comma y. So on x-axis it is touching -2, and on the y-axis it is touching to 5. That's why the coordinates of this point are -2, 5. What about this point? 0, 5. This point 2, 5. This point 4, 5. This point 6, 5. So we have noticed one thing, that all the coordinates on this horizontal line are having same y coordinate. All the points on the horizontal line are having same y coordinate. That's why, and that y coordinate is actually what? 5. So all the coordinates on the line is having y coordinate equal, or we can say y coordinates are same. That's why the equation of this line is given as y equals to something. Y equals to a number, and what this number must be? That y coordinate. So the equation of this line is y equals to 5. Excuse me, someone is there waiting in the lobby.
लेट मी सी. ठीक है. So now, any vertical line. A vertical line can be defined as, just look at this laser point, huh? Any vertical line, or we can say a line which is parallel to y-axis. Parallel to y-axis means in the same direction as the y-axis. In the same direction as the y-axis. Or we can also say this is a line which is perpendicular to the x-axis. Obviously, when the y-axis is perpendicular to x-axis, so this line which is in the direction of y-axis will always be perpendicular to the x-axis. Okay. This line is passing through the fourth point on the x-axis. Let's check the coordinates. If we talk about this point's coordinates, the coordinates of this point, x-axis पे इसने touch किया at 4 and on the y-axis it touches at 2. That's why the coordinates of this point are 4, 2. Coordinates of this point is 4, 0, and the coordinates of this point are 4, -2. Once again, we have noticed one thing. It is clearly visible that all the points on this particular vertical line are having x coordinate equal or x coordinate same. Because x coordinates are same, so the equation of this line is given by x equals to something. X equals to something, or we can say x equals to a number, and that number would be 4. That's why the equation of this line is x equals to 4. Now I am pausing for 2 minutes maybe. If any of you is having any question, please turn on your mic and let me know. Acha, Munch, please turn on your mic. Yes, sir. Munch, कैसे हो बेटा? ठीक ठीक सर. Munch, happy birthday. Thank you, sir, so much. My pleasure. बेटा जैसे ही ये सब नॉर्मल हो जाएगा ना, जितने भी अभी जी पार्टिसिपेंट है ना, सबको ट्वीट देना है, ठीक है? जी 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 सर, बिल्कुल. चलो जी, turn off your mic. Thank you. Continuing, bhai. Now, everyone, this is very much important. A fifth type of a line. अब तक हमने 4 straight lines की equations देखी. First was the x-axis, second was the y-axis, third was any horizontal axis. Someone is there at the lobby. Today I'm having only 36 students, and yesterday I was having around 43 students. Chalo, let's see. Acha, everyone, this is my class. So इस वजह से मैंने मंच को बर्थडे विश किया. आपको जब कभी भी मंच को विश करना है ना, तो सेपरेटली कर लेना. Do not do this in the conversation. Thank you. वरना मंच को बुरा लगेगा. Okay. After the 4 straight lines, this is a fifth type of line. So ये कौन सी line होती है? Let's see. A straight line having a non-zero definite slope and intercepts. दो चीजें बोली गई हैं. भाई स्लोप होना चाहिए जो कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और डेफिनेट भी होना चाहिए. एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप मौजूद है, no matter it is positive or negative.
but there must be a slope. स्लोप होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. जीरो नहीं होना चाहिए means the slope could be either positive or negative. डेफिनेट का मतलब ये होता है कि स्लोप जो भी है उसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. ठीक है. सो वो डेफिनेट, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो स्लोप डेफिनेट नहीं कहलाता. तो दो चीजें हो गई. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जीरो भी नहीं होना चाहिए, ना ही स्लोप इनडेफिनेट होना चाहिए. ओके. द सेकेंड थिंग इज उस लाइन का कोई ना कोई इंटरसेप्ट होना चाहिए. और यहाँ पे पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई इंटरसेप्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई इंटरसेप्ट. नाउ I am going to explain this y-intercept in the further slides. चलो, अगर मैं इसको और सिंपली कहना चाहूं तो क्या कह रहा है? Now we have to look here. A line which is neither of the axis, यानी ना ही वो x axis होनी चाहिए, ना ही वो y axis होनी चाहिए, nor any vertical or horizontal line, ना ही कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, ना ही कोई वर्टिकल लाइन होनी चाहिए. ठीक है. तो इनके अलावा और कौन सी लाइंस होती हैं? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. दिस इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? यस सर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. क्या ये एक्स एक्सिस है? नो. क्या ये ग्रीन लाइन वाई एक्सिस है? नो. क्या ये ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल है? नो, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल. क्या ये ग्रीन लाइन वर्टिकल है? नो, इट इज नॉट इवन वर्टिकल. So this is the line which is having a slope and also some intercepts. Okay, next line. This line. Is this line any of the axes? No, this is not. Is this line horizontal? No. Is it vertical in direction? No. उन चारों में से कोई भी नहीं है. That's why this is the fifth category, the fifth type of the straight line. Now this line. Is this a axis? Any of the axes? No. Is this a straight line? Yes, it is, but it is horizontal. No, it is not horizontal. Is it a vertical line? No, it is not vertical as well. So this is also the type, fifth type of line. ठीक है जी. What about this line? Yes. Is it an x-axis? No. Any of the y-axis? No. Is it horizontal in direction? No. Is it vertical in direction? No. So that's why this line is also the type fifth. ठीक है. Previously, let me tell you, चार इक्वेशंस पढ़ी हमने. ठीक है. हर इक्वेशन देखिए, this, and this. In all of these four types of lines, हमने एक चीज नोट की है. That thing is only one of the alphabets, यानी x और y में से सिर्फ एक अल्फाबेट यूज हुआ है इन चार स्टार्टिंग वाली फोर इक्वेशंस में. इसमें हुआ y इक्वल्स टू 0, इसमें है x इक्वल्स टू 0, इसमें है y इक्वल्स टू 5 और इसमें है x इक्वल्स टू 4. जिसमें x है उसमें y नहीं है, जिसमें y है उसमें x नहीं है. यानी सिर्फ और सिर्फ one of the variable is there. Only one variable is there. Only one variable is there because that variable is definite.
यानी ये पक्का है कि इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट x भले कुछ भी हो y तो 0 होगा। इस लाइन पे y कुछ भी हो x 0 ही होगा। इस लाइन पे x कुछ भी हो y will be 5 एंड इस लाइन पे कोई भी y का कोऑर्डिनेट होगा बट द कोऑर्डिनेट ऑफ x will always be 4। ठीक है, ये बात हमने नोट कर ली। सॉरी, but in the type 5, fifth type of the line, ये वाली examples जो मैंने बताई, this is type 5, this is type 5, this is type 5, and this is also type 5. So for forming the equation of such straight lines, we will have to follow some steps. Now let's see what are those steps. Someone is waiting at the lobby. Let me check. Okay, continuing. मैंने क्या कहा? For forming the equation of such straight lines, we have to follow these steps. So now, please, very carefully, the equation of a straight line, कौन सी वाली? Type 5. ठीक है. The equation of a straight line is of type 5 is given with the help of a slope-intercept form, which is actually represented, or the equation of a straight line is given by y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c, where y and x are the coordinate points, m is slope or the gradient, and c is the y-intercept. C is the y-intercept. Repeating, y equals to mx plus c, where y and x are the coordinates, m is the slope, and c is the y-intercept. Now, what we have to do to form the equation of a straight line, we have to follow these steps. We have to follow the steps. ठीक है जी. Step number 1, we have to find the gradient of the line. अच्छा जी. तो sir, gradient के लिए what we'll have to do? We know that the formula for finding gradient is y2 rise upon 1, which is actually y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है. So this is step number 1. What about step number 2? We'll have to find the y-intercept of the line. And what is y-intercept? देखो बेटा, the small c is actually, जिस तरीके से slope को represent किया जाता है small m से, we used to represent the y-intercept with the help of a letter small c. So जब कभी भी मुझे y-intercept of a line find करना है formula की मदद से, so we are going to use this formula. The formula states that c equals to y minus mx. c equals to y minus mx. So अब ये वाला formula कैसे आया? Let me tell you. Actually, y equals to mx plus c में c को बना दिया सब्जेक्ट. जब c को सब्जेक्ट बनाना है तो mx वहां शिफ्ट किया जाएगा. ओके, mx और c का रिलेशनशिप है एडिशन, तो mx वहां जाके माइनस हो जाएगा. सो y माइनस mx इक्वल्स टू c बन जाएगा. दैट्स व्हाई the formula for finding the y-intercept of any line, यानी the formula for finding the small c is actually y minus mx. ठीक हो गई जी बात. These were the 2 steps. The third step is actually very much easy. जिस तरीके से बेटा खाना बनाने के स्टेप्स होते हैं ना, तो लास्ट स्टेप क्या होता है?
अब खाना खा लो, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट स्टेप यही है कि अब इक्वेशन बना लो। व्हाट वी हैव टू डू, वी ओनली हैव टू पुट द वैल्यूज, बल्कि खाना खा लो से अच्छी एग्जांपल ये है कि खाना सर्व कर लो, प्लेट में निकालो। तो ऐसे ही जो हमने स्टार्टिंग स्टेप्स में किया है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में, नाउ वी हैव टू यूज दोस 2 स्टेप्स आंसर्स इन दिस स्टेप नंबर 3। क्या कह रहा है ये, पुट द वैल्यूज ऑफ स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, एम और सी की वैल्यूज जो हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट की हैं, फाइंड की हैं, उसको किसके अंदर डालना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के अंदर। मतलब ये कि y इक्वल्स टू, इन द थर्ड स्टेप, y इक्वल्स टू mx प्लस c में we have to put the value of m, we have to put the value of c, but we will not change y और x। y और x ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, यानी y की जगह y लिखा जाएगा, x की जगह x ही लिखा जाएगा, क्योंकि कोई सी भी इक्वेशन होती है उसके अंदर वेरिएबल्स का होना लाजमी है। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो दोनों का होना लाजमी है। ओके, अभी आई नो थोड़ा थोड़ा अनक्लियर होगा या यू पीपल माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स, बट सबसे पहला काम क्या है मेरा, दिस। व्हाट इज दिस y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? अच्छा, I am going to explain the concept of y-intercept first with the help of words and then with the help of graphical method. So सबसे पहले देखते हैं words में क्या लिखता है। The concept of y-intercept of a straight line. Y-intercept of a straight line is the point. Oh, very much important thing कि y-intercept actually है क्या? एक point है, कहाँ पे है? On the y-axis. Y-intercept is the point on the y-axis. Y-intercept is the point on y-axis. ठीक है। अब y-axis पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कौन से वाला पॉइंट, वेयर द सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन यानी जिस लाइन की इक्वेशन मुझे बनानी है, वेयर द सब्जेक्ट लाइन, पहली चीज क्रॉसेस, टचेस या टेंड्स टू टच, या तो टच करे, क्रॉस करे, या फिर टेंड्स टू टच। अब ये टेंड्स टू टच क्या है ये भी मैं बता देता हूँ, चलो जी। अच्छा जी, what we can say in simple words, it is a point, it means y-intercept. Y-intercept is a point where the subject line, कौन सी लाइन, the subject line जिसकी इक्वेशन मुझे बनानी है, intersects the y-axis, जहां पे y-axis और हमारी वाली लाइन मुलाकात करती हैं, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, that point is actually the y-intercept of that line। ठीक है। ये हो गया with the help of words. Now I am going to explain this with the help of graphs. Now look here. This is line number 1 and this is line number 2. ठीक है। Right now I am talking about line number 1. अच्छा जी, line number 1 क्या है? Line number 1 actually बेटा यहां से start हुई है, this is line number 1, this is line number 2. Line number 1 यहां से स्टार्ट हुई है, यहां पे खत्म है। आगे देखो, I have drawn a dotted line. It means actually line यहां तक थी, actually line was till here. Dotted line बना के मैंने खुद extend किया है, यानी कोई सी भी लाइन हो, चाहे ये वाली लाइन हो, now look here, ये वाली लाइन, right now ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी जगह पे y एक्सिस पे क्रॉस करेगा। किसी ना किसी जगह पे ये y एक्सिस से क्रॉस करेगा। सिमिलरली लाइन नंबर 1 यहां तक थी, मैंने उसको एक्सटेंड किया और देखा वो कहां पे क्रॉस किया है इसने। नाउ द पॉइंट
where the line is intersecting the y-axis is known as the y-intercept. That's why it is written here. That's why I have written here that this point is actually what? The y-intercept of this white line, or we can say line 1. कोई सी भी लाइन है वो y-intercept उसका होगा ही होगा. कोई सी भी लाइन मीन्स कोई सी भी ऐसी लाइन जो कि फिफ्थ टाइप वाली है, बिकॉज वी आर राइट नाउ हम फिफ्थ टाइप समझ रहे हैं. ठीक है जी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्क्रीन लाइन, लाइन नंबर 2. ये एक स्ट्रेट लाइन है. जी हाँ, इसका कोई ना कोई स्लोप है. यस सर, इट इज हैविंग अ नेगेटिव स्लोप. क्या इसका वाई इंटरसेप्ट है? ऑब्वियसली. कहाँ पे होगा सर? जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस से टच करेगी. सो हियर इज द पॉइंट. ठीक है, this is the point where the line is crossing the y-axis. So this point is actually the y-intercept of line 2 or the green line. So this point is C1. C1 means C means y-intercept, 1 means line 1 ka. This is C2. C2 means C means y-intercept and 2 means 2 वाली line का. ठीक हो गई बात? अच्छा सर, अभी जो आपने इतनी सारी एग्जांपल्स बताई थी सर, उसमें समझाइएगा. चलो, वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर क्लियरिफिकेशन. देखो, ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है जी. दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन. Is this line intersecting the y-axis? Yes, it is intersecting here. So this point is actually what? Y-intercept. अब से y-intercept को मेजर कैसे किया जाएगा? हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था 3. तो कौन से पॉइंट से इस लाइन ने y-एक्सिस को क्रॉस किया? तो इसका C का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3. इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? 3. सिंपल. दिस लाइन. अब ये है फॉर एग्जांपल 4. ठीक है, और ये है 2. मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए या वाई इंटरसेप्ट चाहिए? एक्स इंटरसेप्ट नहीं चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए. ओके, वाई इंटरसेप्ट मींस the point where the line is intersecting the y-axis. So the y-intercept of this line C is equals to 4. ठीक है? This is the concept of the y-intercept. What about this? Is it crossing the y-axis? Yes, it is crossing the y-axis. From what point? From point 0. From point 0. So the y-intercept of this particular line is 0. ठीक है जी. If this is crossing to the point 2, इसको मान लेते हैं point 2. So the y-intercept of this line is C equals to 2. So I hope the concept of y-intercept is very much clear now. If anyone of you is having any of the questions, please let me know by turning on the mic. नाम प्लीज. हमारा जनाब हमारा बोलें. सर, जो जैसे आपने बताया कि मतलब जो लाइन क्रॉस करती है वाई एक्सिस को, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, उस पॉइंट को. बिल्कुल. तो सर, कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई लाइन है लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रही, तो क्या हम, जैसे आपने डॉटेड लाइन बनाई थी पिछले ग्राफ में, तो जी ऐसे जी हमें बनानी पड़ेगी? जी हाँ भैया बच्चा. देखो, वंस अगेन हमारा लिसन. हाँ, अगर ग्राफ गिवन है, अगर क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, तो फिर तो वाई इंटरसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा. अगर ग्राफ गिवन है लेकिन लाइन छोटी सी बनी हुई है और मुझे एग्जैक्टली एक्सटेंड करने से समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से पॉइंट से गुजर रहा है,
So we have to use this formula. कौन सा formula? C equals to y minus mx. ओके सर। ओके, और एक और बात हमारा, जी ये देखिए, ये वाली लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, नजर आ रही है? जी जी। क्या ये बड़ी कर दूं, जितनी भी बड़ी कर दूं, y एक्सिस से क्रॉस कर सकती है? यस और नो? ये वाली लाइन पर नहीं। सॉरी, हाँ कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि y एक्सिस और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस हाँ पहले नेवर लाइन मीट ईच क्रॉस। अदर। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल। आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे ना, कि सर कोई ऐसी लाइन बताइए जिसका y इंटरसेप्ट हो ही नहीं, तो वो ये वाली लाइन है। दूसरा क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि सर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो एक्सटेंशन भी मैंने समझा दिया। ओके बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? Anyone else? Very good. Now, moving towards an example quickly. We are left with 10 minutes. Look here. Equation of a straight line. We have to follow these steps. Blah, 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 blah. Solved example. Everyone, please be very much focused. Given that the points x and y, we are given with the 2 points x and y. ठीक है जी? The coordinates of x are also given. The coordinates of y are also given. ठीक है जी? What we have to do? We have to form the equation of this line. Okay जी? क्या चीज given है? 2 of the points given है. 2 points given है, मतलब मुझे x1 और y1 पता है, x2 और y2 भी पता है. ठीक है? The formula for finding the slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So slope क्यों find कर रहे हैं? Because we are doing the step number 1. Step number 1 states that we have to find the slope of that line. तो स्टेप नंबर 1 में हमने जल्दी से वैल्यूज पुट की और मुझे पता चल गया द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट पर्टिकुलर लाइन, जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है ना, उसका जो स्लोप है दैट इज -1. यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हो गया अकम्प्लिश्ड. 2 पॉइंट्स गिवन थे, x1 y1 x2 y2, स्लोप के फॉर्मूला में पुट किया, पहला स्टेप हो गया. ठीक है जी? सेकंड स्टेप क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट फाइंड द y इंटरसेप्ट. अच्छा सर, ग्राफ तो बना के नहीं दिया हुआ, तो क्या किया जाएगा? y इंटरसेप्ट फाइंड किया जाएगा. अब देखो बेटा, फॉर फाइंडिंग द y इंटरसेप्ट वी यूज द सेम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके अंदर चेंज क्या होगा? द थिंग आई टोल्ड यू, c को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा. ओके, स्टेप नंबर 1 का आंसर क्या था? m equals to -1. अच्छा जी, अब c equals to y minus mx. सही, ये तो इक्वेशन आ गई. ठीक है जी? वेयर x एंड y द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट. सर कोई सा भी पॉइंट मींस, लुक हियर, मेरे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट x एंड पॉइंट y. मुझे c की सॉरी, c के फॉर्मूला में 3 चीजें पुट करनी है. y भी पुट करना है, m भी पुट करना है, और x भी पुट करना है. अब ये जो y और x है ना, ये दोनों एक ही पॉइंट के होने चाहिए. यानी इफ आई एम यूजिंग पॉइंट x, तो y की जगह 4 पुट करना पड़ेगा और x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा. ये बात याद रखिएगा. और m की जगह -1. लेकिन सर, व्हाट इफ वी यूज पॉइंट y? अगर पॉइंट y यूज किया जाता है तो c इक्वल्स टू y माइनस एम एक्स के अंदर c अननोन है, y माइनस एम एक्स में x और y की जगह व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट y. तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,7. तो y की जगह 7 एंड x की जगह 0 और m की जगह जो हमारा आंसर आया है -1. ठीक हो गई जी बात? नाउ मूविंग हियर,
look here. What we have used here, we have used the coordinates of point x 3,4. ठीक है जी, let's check. c equals to y minus mx में y की जगह 4, ओके जी, y की जगह 4, x की जगह 3, यस, एंड m की जगह -1. हमने पुट किया 4 माइनस माइनस प्लस 1, 3 टाइम्स इज 3, सो 4 प्लस 3, मेरे पास आंसर क्या आ गया? c equals to 7. ओके, वी आर हैविंग स्टेप नंबर 1 का आंसर क्या था? स्टेप नंबर 1 का आंसर था m equals to -1. स्टेप नंबर 2 का आंसर था c equals to 7. खाना तैयार हो चुका है. नाउ वी ओनली हैव टू पुट और सर्व इट. प्लेट के अंदर खाना निकालना है. ओके, तो कैसे निकाला जाएगा? जो हमारी मेन इक्वेशन है y equals to mx plus c, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ m और c की वैल्यू को पुट करना है. यानी y equals to mx plus c में सिर्फ दो वैल्यूज पुट करूंगा. y और x ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा. सो लेट्स सी, y ऐसा का ऐसा, m की जगह मैंने पुट किया -1, x ऐसा का ऐसा, सम साइन ऑफ एडिशन ऐसी की ऐसी, x की c की जगह हमने पुट कर दिया 7. सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. ये हमने कर दिया. अब इसको सॉल्व कर लो. अब ये देखो बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x, और माइनस का 1 था तो -x. सो y इक्वल्स टू द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन तैयार हो चुकी है. इक्वेशन ऑफ द लाइन तैयार हो चुकी है. लुक हियर, y equals to -x plus 7 is actually the equation of the line. सर ये थोड़ी सी, अच्छा, इसको ऐसे नहीं नीचे की तरह लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है. माइनस का x वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x plus y equals to 7. वन एंड द सेम थिंग. इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है. यू विल गेट द प्रॉपर मार्क्स फॉर दिस. Our today's lecture is completed. If any one of you is having any of the question, query, please turn on your mic and let me know, please. बेटा एक और बात, क्योंकि लेक्चर एंड हो गया है, so you're not allowed to leave right now. जब मैं बोलूंगा, then you will leave. Anyone is having any question, please? If yes, let me know. चलो concluding, जल्दी से देखिएगा इधर. The equation of the x-axis or the horizontal axis is always y equals to 0. हमने 5 टाइप्स पढ़ी है ना, ये पांचों का कंक्लूजन है. Second type, the equation of the y-axis or the vertical axis is x equals to 0. Third type, the equation of any horizontal line, कोई सी भी horizontal line है, उसकी इक्वेशन कैसी होगी? y equals to something. सर ये समथिंग का मतलब यानी कोई ना कोई नंबर, जैसे y equals to 5 हो सकता है, y equals to 3 हो सकता है, y equals to -2 हो सकता है. तो सर ये नंबर कैसे पता चलेगा? वो नंबर कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि वो y के कौन से कोऑर्डिनेट से गुजर रही है. कौन सा y का कोऑर्डिनेट है जो बिल्कुल सेम है? यहाँ पे हमारे पास 5 था, इसलिए y equals to समथिंग की जगह पे हमने क्या लिखा? y equals to 5. ओके, नेक्स्ट, कोई सी भी वर्टिकल लाइन, उसकी इक्वेशन हमेशा क्या होगी? x इक्वल्स टू समथिंग. अब वो समथिंग कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू -4 था. ओ, x इक्वल्स टू 4 था. क्या 4 क्यों था? क्योंकि सर इसका x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट पे सेम है, एंड दैट पॉइंट इज 4. ठीक हो गई बात. स्टार्टिंग की 4 इक्वेशंस के अंदर देखो 1 2 3 4, ओनली वन ऑफ द अल्फाबेट्स आर यूज्ड. लेकिन सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइप नंबर 5 ऐसी है जिसमें दोनों अल्फाबेट्स यूज होते हैं. देखो हमारा पिछला इक्वेशन क्या बना था? x plus y equals to 7. यानी we are having both of the coordinates. ठीक है ना? ओके, सो कंक्लूजन भी हो गया. Now, if you people are using your mobile phones for this lecture, so have a quick screenshot for this conclusion. And if you are using your laptop,
लैपटॉप तो अपने मोबाइल से जल्दी से इस कंक्लूजन की पिक्चर कैप्चर कर लीजिए. आई एम गिविंग यू 20 seconds. Okay. Now, note this question. You have to solve this question. Acha, Damini, are you here? Please turn on your mic. Are you there? Hello? अच्छा चलो, दामिनी नहीं है. Jose Malik, are you there? If you are here, please turn on Yes, your sir. mic. Jose, क्या हाल है बेटा? ठीक सर. बेटा, yesterday you left the class earlier. Yes, sir. जी सर. क्यों? चलो बहरहाल, जो yesterday वाला था वो भी मैंने आज समझा दिया है. You have to solve these questions. ठीक है? ठीक है सर. Turn off your mic. Thank you so much. Nikhil. नहीं है. भागभवी. Okay, well. हेलो सर. हेलो. सर आप लाइन 5 वापस से समझा दें. ये उमर साहब हैं? जी सर. उमर साहब क्यों भाई? सर नेट प्रॉब्लम था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. अल्लाह अकबर. चलो उमर, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज देखिएगा और माइक ऑफ ना करना अपना. ओके सर. देखो बेटा, लाइन 5 एक ऐसी लाइन है जो कि ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है. हेलो. ओके सर. ना ही कोई y एक्सिस है ना ही x एक्सिस है. तो वो कैसी लाइन हो सकती है? ऐसी सर लाइन मतलब वो वाई और एक्स को टच नहीं करेगी. देखो बेटा, ऐसी लाइन होगी. ये ग्रीन वाली लाइन नजर आई? यस सर. क्या ये हॉरिजॉन्टल है? नो सर. क्या ये वर्टिकल है? नो सर. क्या ये कोई एक्सिस है? नो सर. हाँ, तो दिस इज द टाइप 5. ओके सर. अब वो इतनी बड़ी बनाई हुई है मैंने, मैं ऐसी भी बना सकता हूँ. देखो इधर, ये ग्राफ Yes, बनाया sir. मैंने, ये लाइन भी हो गई. ये भी टाइप 5 ही है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इसका y इंटरसेप्ट करने के लिए मुझे खुद इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. सिंपल. ओके सर. ठीक है जी. क्योंकि लाइन को एक्सटेंड करना हमारे हाथ में होता है व्हेन वी आर गिवन विद द ग्राफ, या फिर चलो अभी एक्सटेंशन छोड़ दो आप. तो ये एक टाइप हो गया, एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. ये भी है, ये भी है, ये भी है. ठीक है बेटा, ओके सर. ये होती है Yes, टाइप sir. 5. अब डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग द इक्वेशन एज वेल? यस सर. स्टेप्स समझ आ गए या वो भी बताऊं? सर वो तो आ गए, पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. ये लिखा उसके हुआ है. बाद वेरी गुड. वाई और एक्स की वैल्यू रख के वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे. वेरी गुड. फिर सर इक्वेशन बना देंगे. सिंपल. और फिर इक्वेशन बन जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा लाइक दिस. ओके सर. थैंक Okay. यू. Thank यस you. सर. Okay, turn off your mic. Anyone else is having any question, please let me know. Acha, because this is Tuesday, I want all of you to write down the feedback for these two classes in comments, and then you may leave. Honest comments chahiye. Please start writing it down. Thank you so much. मेरी तरफ से take care, Allah Hafiz. And one more thing I